साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ओवर। हम अंग्रेजी बोलेंगे तो ठीक रहेगा ना, किताब अंग्रेजी में लिखी है तो सोच भी थोड़ा अंग्रेजी में ही है। लेट मी पिक अप फ्रॉम वेयर Sanji left to say that we need Indus Waters Treaty 2.0 is a useful debate. एक अच्छी सोच है। 60 साल से ऊपर ये ट्रीटी हो गई है। Rivers are not static. It's a very dynamic resource. It changes, flow होता है, स्केर्सिटी इश्यूज आते हैं, अवेलेबिलिटी की समस्या होती है, ओवर यूज होता है, एक्सेट्रा। तो डायनामिक्स ऑफ द रिवर्स कीप चेंजिंग। शुड द ट्रीटी ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द चेंज? ये पॉलिसी लेवल पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज का। बट रिमेंबर, दिस ट्रीटी इज बिटवीन टू स्टेट्स, टू sovereign states, and in international relations, when you have a treaty which has been duly signed in 1960 in Karachi by Jawaharlal Nehru and Muhammad Ayub, who was the chief martial law administrator. The duly signed हुआ है वो treaty, and the treaty which has no exit clause, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, मुकर नहीं सकते हैं इस treaty से। तब ये क्वेश्चन पूछना कि can we have Indus Waters Treaty 2.0 पॉलिटिकली बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसकी लीगैलिटी, इसकी टेक्निकलिटी एंड द लार्जर इंटरनेशनल रिलेशन की जो डायमेंशंस हैं वो इसमें बखूबी ऐड हो जाती। दूसरा प्रश्न ये आता है पॉलिसी मेकिंग में एंड पॉलिटिकल लीडर्स के थॉट प्रोसेस में कि कैन वी एब्रोगेट द ट्रीटी? फाड़ के फेंक दें, यूजलेस। After all, when we signed the treaty, we thought we will get peace and friendship with Pakistan. वो तो हुआ नहीं। Constantly we've been not only war in 65-71, but Kargil हुई, कई cross border terrorism act हुए, Parliament attack in 2001, 2008, Mumbai attack, and series of cross border terrorism, terrorist attacks होते आए। So we do not have a responsible neighboring country. So why should we live with the treaty? Why should we honor the treaty? ये हम लोग कभी कभी सोचते हैं इस तरह से। Political leaders think differently. हम लोग उनके हंसी मजाक उड़ाएं, सोचे कि इन्हों क्या जानते हैं ये, हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम ही लोग एडवाइस दें। Political leaders mostly think in terms of statesmanship. समझे? उनका होता है एक लार्जर विचार कि पीस should prevail, there should be prosperity, there should be good relationship. हर political leader एक good relationship के रास्ते पे चलता है। और हम ये देखे हैं 60 साल में वेरियस सरकार के थ्रू, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वाजपेयी की गवर्नमेंट क्यों ना हो। आफ्टर ऑल लाहौर की जो बस यात्रा थी वो तो वाजपेयी ने शुरू की थी। फ्रेंडशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, राइट। और जो हमारी जो वेस्टर्न जो थिंकिंग है, यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न पावर्स, सऊदी, जो अक्सर हमें एडवाइस करते रहते हैं कि इंडस बेसिन विल बी अ फ्लैश पॉइंट, ये दोनों देश जो हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, विल फाइट ओवर इट, और न्यूक्लियर अटैक भी होगी, या पूरा जो है दुनिया खत्म हो जाएगी। At no point of time in the last 62 years has India and Pakistan ever has pitched for anything on the Indus Basin. Disputes, differences वो रहेगी। पानी तो नेबरहुड में भी डिफरेंसेस हो जाती हैं, है कि नहीं, कि ये कम पानी आ रहा है, लेकिन both, especially India, has been a very responsible country, abiding by the treaty, finding ways and mechanism to preserve the text of the treaty. राइट। इसलिए बोलना कि इंडस बेसिन एक फ्लैश पॉइंट होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, जनरली होता है, ये बोला जाता है ना वाटर वॉर्स, एक बड़ा पॉपुलर शब्द चला हुआ है 21वीं सदी में कि देयर विल बी मेनी वाटर वॉर्स। अनफॉर्चुनेटली देयर इज बीन नो वाटर वॉर्स। द वॉर इज हैपनिंग मोर इन यूरोप। आपके खुद बैकयार्ड में यूक्रेन में लड़ाई हो रही है,
नेटो खुद अग्रेसर बना हुआ है और हम लोग आके बोलते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी अ फ्लैश पॉइंट. द रियल फ्लैश पॉइंट इज देयर इन यूरोप. दे आर द ग्रेटेस्ट डिसरप्टर ऑफ पीस एंड डिसऑर्डर एंड डिसहार्मनी. इट इज नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड व्हाई इट इज नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान? बिकॉज इंडिया, अब कई नदियों पे जाके देख लीजिए, जो अपर राइपेरियन होता है, चाइना हुआ या टर्की हुआ, कई देश हैं जो अपर राइपेरियन है, जहां से पहले फ्लो ऑफ वाटर आती है. नो वन हैज बीन एज रिस्पॉन्सिबल एज इंडिया एंड इट इज अ यूनिक कंट्री इन दैट सेंस. इवन जब हम लोग ये ट्रीटी साइन किए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कभी कभी एक एलिमेंट ऑफ जेनरोसिटी भी आती है. इसलिए जब आप ये ट्रीटी देखेंगे ना, 80-20 की जो विभाजन है, वो इट इज एन एलिमेंट ऑफ जेनरोसिटी. नाउ वी कैन क्वेश्चन दैट टुडे. क्वेश्चन कर सकते, व्हाई शुड इंडिया बी जेनरस? व्हाई शुड इंडिया बी लार्ज हार्टेड? हमारी कई नेबरहुड है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, उनके साथ भी हमारे नदियां के रिलेशनशिप है. नेपाल के साथ वी हैव वाटर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन शेयर्ड बेनिफिट. विद बांग्लादेश जो गंगा पे ट्रीटी है वो ऑन द शेयर्ड वाटर्स है. भूटान के साथ जो रिलेशनशिप है वो एक विन विन रिलेशनशिप है. हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स को डेवलप करते हैं और वहां से हम लोग उसको बाय करते हैं. पाकिस्तान के साथ द पार्टीशनिंग ऑफ द ट्रीटीज है, मतलब पार्टीशनिंग ऑफ द रिवर, 3 वहां पे 3 हमारे पास. तो जो इंडिया की जो एक ओवरऑल रीजनल डिप्लोमेसी है, एज स्टूडेंट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर एलिमेंट्स ऑफ जोड़ के रखना इस रीजन को, राइट? एंड व्हेन यू लुक एट ज्योग्राफी, वेरी सिंपल, लुक एट द ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया. आप देखेंगे कि कौन जोड़ता है? नदियां. द रिवर्स कनेक्ट साउथ एशिया, चाहे वो नेपाल के साथ हो, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो, चाहे वो भूटान के साथ हो, और चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो. So rivers are a great connector, and if we look at rivers in terms of development, in terms of economic returns, in terms of even conservation, then there are great dividends that one can get. But let me get back to these 2 books, Indus Waters और Indus Basin Uninterrupted. दोनों करीब करीब एक साथ रिलीज हुई थी ना अशोक जी, और हम दोनों नहीं जानते थे एक दूसरे को. सो लाइक अ रिवर कन्वर्जिंग, दीज 2 बुक्स ऑल्सो कन्वर्ज्ड. एक ब्लूम्सबेरी ने पब्लिश किया 2020 और एक पेंगुइन ने पब्लिश किया 2021. एंड आई थिंक बोथ दीज बुक्स, हम इन बोलेंगे कि इट्स फैंटास्टिक और इट्स पाथ ब्रेकिंग और वगैरह वगैरह जैसे बोला जाता है, बट दीज आर इंटरेस्टिंग बुक्स फॉर 2 थिंग्स. वन, बिकॉज जो इंडस वाटर्स है वो आपको एक पॉलिटिकल क्लाइमेट बताता है व्हेन द ट्रीटी वाज साइंड. दैट वाज द 1950 पीरियड जो था, और 1960 में जब साइन हुई. इट्स अ गुड वे ऑफ नोइंग द हिस्ट्री. एंड एज स्टूडेंट्स, और हम अक्सर हर जगह ये बोलते हैं कि we should never forget history, even when we understand contemporary issues. जो आज की जितनी समस्याएं हैं उसकी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और उस कॉन्टेक्स्ट को हमें भूलना नहीं चाहिए. इनफैक्ट वी शुड स्टडी मोर एंड मोर द हिस्ट्री ऑफ थिंग्स. चाहे मैं हिस्टोरियन हूं या ना हो, मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, और मैं अक्सर बोलता हूं कि आई माइट नॉट बी अ हिस्टोरियन, बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम नोइंग हिस्ट्री, राइट? So I think ये जो किताब है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1947 to 1960 के हिस्ट्री पे जिक्र है, एंड हाउ द ट्रीटी केम अबाउट. जो इंडस बेसिन अनइंटरप्टेड है, इट कवर्स ऑलमोस्ट 4000 years of the Indus history, starting right from Indus civilization to the signing of the treaty in 1960. and उसमें 4 महत्वपूर्ण चीज हम देखें, और बड़ा आर्काइवल वर्क है. I have not said anything. It is based on archives, diaries, notes, field expressions of how the British saw the Indus Basin. And इसमें 4 चीज नजर आती है. First, you must know that हर इतिहास में एक नदी होगी और नदियां होगी, और हर नदियां में एक इतिहास है. So there is a history in every river and there is a river in every history. And Indus Basin के साथ मेरे ख्याल से कई सिविलाइजेशन रिवर्स हैं. टिग्रिस, यूफ्रेटिस, आपको नाइल,
आपको द येलो रिवर इन चाइना, कई सिविलाइजेशनल रिवर है, बट इंडस बेसिन जैसा हमें लगता है कि कोई ऐसा सिविलाइजेशनल रिवर नहीं है जो करीब 3000 साल का एक हिस्ट्री लेके आता है हमारे पास. एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, in terms of politics, in terms of how the British looked at the Indus Basin, in terms of the partition history, 1947. जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ, जब रैटक्लिफ लाइन जब ड्रॉ किया गया, और रैटक्लिफ का कोई नॉलेज नहीं था लैंडस्केप के बारे में, वो तो जूझ रहे थे हीट वेव से और उनको डायरिया हो गया था, so he was battling that and didn't have any knowledge of the topography of the Indus Basin. बट इस किताब में जो हमें मालूम चला, और आई थिंक दिस इज न्यू नॉलेज फॉर हिस्टोरियंस इन पर्टिकुलर, इज द रोल ऑफ द सिविल इंजीनियर्स इन पंजाब, खासकर क्योंकि उस समय ईस्ट पंजाब हो गया. द रोल ऑफ चीफ इंजीनियर स्वरूप सिंह, हु हेडेड द पंजाब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ही वाज परसेप्टिव इनफ टू अंडरस्टैंड कि जो ये रैटक्लिफ लाइन जो ड्रॉ किया जा रहा था, उसमें फिरोजपुर का जो हेडवर्क था ऑन द सतलज पाकिस्तान की तरफ जा रहा था. And that needed to be changed before the Radcliffe line became official. And वो बड़ा एक किताब में जिक्र है how the politics evolved, how स्वरूप सिंह and एक और बीकानेर के एक इंजीनियर होते थे, सिविल इंजीनियर called कंवर सेन, उन दोनों ने मिलके जब ये स्टडी किया कि Radcliffe line would be a disadvantage to India, both strategically and economically, तो उन्होंने the political leaders and masters को influence किया, Mountbatten and Pandit Nehru and Patel etc. Eventually the Radcliffe line was changed. The Radcliffe line moved a few kilometers west towards Pakistan. The Firozpur headwork came to us. Now history में मेरे ख्याल से the role of civil engineers during the time of the partition is very understudied, and इसको हम लोग को और पढ़ना चाहिए. I think the role of the civil engineers are very valuable to understand the strategic gains that India had on the Radcliffe line. So I think these are interesting elements that is very important. Last में before I talk about the Indus Waters Treaty in 3 minutes, मैं ये कहना चाहूँगा कि the biggest thing that the Indus Basin teaches us is that we acquire knowledge, you know. We inherit many things. हम लोग religions को inherit किए हैं, cultures को inherit किए हैं, traditions, norms, customs, these are all inherited. We have also inherited the knowledge of water management from the Indus civilization to the current times. You will be surprised, 100 साल पहले 1921-22 में जब ये excavations चल रहा था मोहनजोदारो और हड़प्पा में, it was for the first time we got to know कि the Indus civilization was a hydraulic society. उनकी जो knowledge and understanding थी water management पे was supreme, as good as what we are thinking today. They thought about dry farming, खुशकबा बोलते थे उसको. They thought about inundation, irrigation, साई बाबा बोलते थे उसको. They had something called rainwater harvesting, जो आजकल हम लोग जिक्र करते हैं. Right? They had something called storage of the waters, जो हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि कश्मीर में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए वेस्टर्न रिवर्स पे. तो ये जो डायमेंशन, that knowledge of water management we have also inherited, and we need to use new knowledge to build on that inherited knowledge. Right? So that is very important. So let me finally come to what we should do with the Indus Waters Treaty. Mutwani ji and Sanji ने जिक्र किया कि 2.0 is something very practical. I think so. नया नॉलेज आया है, क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंडिंग हो गई. We need to re-look at the treaty, but we of course need to re-look at the treaty with both the parties together. We cannot just look at it and Pakistan को ignore कर दें. But can that happen? Very difficult to happen because the political climate between India and Pakistan is not very conducive, right? But it is a good idea because चेंजेस आई हैं बेसिन में, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो पहले नहीं था वो अब आ गया है. इवन द बिल्डिंग ऑफ डैम्स, टेक्नोलॉजी जो है काफी बदल गई है. तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट जो डैम्स के बारे में जो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है ट्रीटी में वो उसी को हम लोग फॉलो करें. तो ये चेंजेस आर इम्पोर्टेंट, राइट? ट्रीटीज जब बनती हैं तो it needs to change, it needs to reset, it needs to readjust.
अनफॉर्चुनेटली इस ट्रीटी का जो दायरा है, जो लीगल दायरा है, वो बोलता है कि देयर इज नो एग्जिट क्लॉज, आपको इसी के साथ रहना होगा. दो इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर कोऑपरेशन, it talks about certain things in which we can think about 2.0. Abrogation is not the solution for this treaty. हमारे कई कॉन्स्टिट्यूंसी हैं इंडिया में कि जब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है तो हल्ला करते हैं, टीवी पे आके चिल्लाते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को फेंक दो, बर्बाद कर दो, डस्टबिन में डाल दो. ये टेल मी, हाउ कैन यू डू दैट? कैन यू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर? इज इट सेंसिबल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर? Whom are you going to hurt in Pakistan? Poor farmers, poor people. Remember, Prime Minister Modi made a very important statement. We have to focus on the people of Pakistan, not the establishment of Pakistan. You can hurt the establishment through various ways, but at the end of the day, you might just hurt the people. So it's very important to understand this frame, because पानी जो है सबके लिए है, most essentially for the farmers. So you will not create that sort of trust or an understanding which is required and which the political leaders search for when you think in terms of abrogating the treaty. Also remember, Nepal ko kya ho raha hai? When you start abrogating treaty, our relationship with Nepal, Nepal will get worried, Bangladesh will get worried, Bhutan will get worried, Sri Lanka will get it. So what is the cost and gain? As students, you must understand. Whenever you do a certain thing, what are the costs, what are the gains, what are the benefits, what are the losses, right? So the third element of treaty pe hai, which I generally argue, and I think Ashok ji also agrees with that, is how do we make the treaty efficient? How do we optimize the treaty to its maximum? तो हमारे उस treaty में कई provisions हैं जो इंडिया को दिया गया है. For example, दो वेस्टर्न रिवर्स झेलम, चेनाब और इंडस, एक्सक्लूसिव राइट्स पाकिस्तान को दिया गया है, जिस तरह से हमें एक्सक्लूसिव राइट ईस्टर्न रिवर्स को दिया गया है, रवि व्यास और सतलज पे. लेकिन हम लोग को ये भी प्रोविजन में लिखा गया है कि 3.6 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर वी कैन डेवलप ऑन आवर साइड इन कश्मीर. वी कैन स्टोर दैट वाटर. 62 इयर्स में हम लोग कुछ नहीं किए हैं. अभी इस सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, बर्सर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि अब स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, which we should have done long time ago, which we have not done. Even on the eastern rivers, रावी व्यास लिंक कैनाल बनाया जा रहा है, उसके बाद आपकी कुछ प्रोजेक्ट अब शुरू किया जा रहा है. तो even the eastern rivers we have not maximized its potential. That is defined in the provision. हम लोग beyond the treaty नहीं जा रहे हैं. जो treaty बोल रहा है वही चीज हम लोग नहीं किए हैं 62 years में. So what is the point of abrogating the treaty when you yourself have not done anything on the treaty? And this is a question which often the political leaders understand. Why? Let us first utilize the treaty before we can think about abrogating the treaty. So these are various issues in this waters में जो कि अक्सर डिबेट पे आती हैं. लेकिन as students you should have a much clearer perspective in understanding what is this Indus Basin, how valuable it is, what is this treaty all about, and you should also bring in some new ideas, because at the end of the day it is not so much the treaty. The future is whether the Indus Basin will be sustainable enough to last. Will 300 million people जो survive करते हैं इस basin पे, what will be the challenges in the future? So the challenges has nothing to do now with the treaty. The challenges are far wider, far more adverse, and we'll have to think in very different terms when we look at the Indus Basin for the future. Thank you very much.